हेलो मेरे जानदार और शानदार बच्चों, मेरा नाम है योगेश मल्होत्रा। ठीक है, तो आज हम एक नया एक्साइटिंग टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, और अपने बारे में तो इंट्रोडक्शन में दूंगा ही डेफिनेटली, वो है रदरफोर्ड मॉडल। मैं जब छोटा था तो आई ऑलवेज यूज टू वंडर कि मतलब व्हाई एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम एंड हु डिस्कवर्ड इट। जब किसी ने देखा नहीं, नोबडी हैज सीन द एटम टिल डेट, नोबडी नोज कि एटम एक्चुअल में कैसे दिखता है, बट वी स्टिल हैव डिफरेंट मॉडल्स। ठीक है, और अगर आप और जानना चाहते हो इन चीजों के बारे में तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, हमारी एक खुद की वी हैव आवर ऐप कॉल्ड एज द ओडा ऐप, इज वन ऑफ द बेस्ट इनोवेटिव ऐप जिसपे आप क्लास 1 से लेके 11 तक पढ़ सकते हैं। और मंडे को हमारा एक अमेजिंग ब्रिज कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो कि 6 डेज का कोर्स होगा। ठीक है, 1 वीक ड्यूरेशन, 3 मैथ्स 3 साइंस क्लास मिलेंगी आप लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दैट एक पर्सनल सपोर्टिंग टीचर, एक टीचर तुम्हें पढ़ाने के लिए मिलेगा और एक टीचर स्पेशली जिसके लिए तुम ये जानोगे कि तुम्हारे डाउट्स कैसे क्लियर करे जाए और एक इंटरेस्ट कैसे जनरेट किया जाए। ऑल दीज थिंग्स विल बी गिवन टू यू इन स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। अपार्ट फ्रॉम दैट होमवर्क मिलेगा ऐप के अंदर विच इज ऑटोमेटेड, एज वेल एज एक इसके अंदर सब्जेक्टिव होमवर्क भी होगा। कॉइन्स, द बेस्ट चीज, कॉइन्स रिवॉर्ड्स इसके अंदर बहुत सारे मिलेंगे आपको। ऐप के अंदर आप देख सकते हो और बुक्स मिलेंगी पीडीएफ वर्जन में। खैर, ये तो हुआ पूरा ब्रिज कोर्स। इसके बारे में अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसपे आप क्लिक करके एनरोल कर सकते हो डायरेक्टली, बट मेक श्योर चूज द क्लास जो आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, small introduction about me. My name is Yogesh Malhotra and I am a BTech from National Institute of Technology, Surathkal. By this day, I have mentored more than 78,000 students. Now, I'm a master teacher for physics and more than 8 years of experience. The topic is Rutherford's model, but I have given over here the Bohr and Rutherford's atom. Actually, it was a rivalry. J.J. Thomson, if you have heard the name, was the first person who gave the atomic model. And you know who worked in his lab? Niels Bohr. Niels Bohr worked in the lab of J.J. Thomson. मैंने जब ये पहली बार पढ़ा तो I was like mind blowing. नील बोहर काम करता था J.J. थॉमसन की लैब में. And now coming to the important part, he did not agree with J.J. Thomson. उसने कहा कि यार मैं एग्री नहीं करता हूं J.J. Thomson के साथ. Why? Because J.J. Thomson model was a plum pudding model. Now what's a plum pudding model? आप लोगों ने खीर तो देखी ही होगी. ठीक है, और अगर खीर नहीं देखी तो चॉकलेट चिप कुकी होती है. सो एज्यूम देयर इज अ चॉकलेट चिप कुकी या फिर प्लम पुडिंग. खीर है, व्हाइट कलर का, देयर इज चावल, देयर इज अ मिल्क इन इट एंड सम स्वीटनेस, बट देयर आर फ्यू रेजन्स जो कि मम्मी ऊपर से डाल देती है. राइट, आप लोगों ने देखा ही होगा कि उसके अंदर किशमिश डलती है. नाउ तो हमारे J.J. थॉमसन भैया कहते हैं कि ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है ना, ये बहुत सिंपल है. ठीक है, ये जो व्हाइट कलर का सब कुछ है इसको तुम पॉजिटिव मान लो. तो लोगों ने कहा J.J. थॉमसन भैया बोल रहे हैं तो भाई सही होगा. तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मान लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं. और ये जो इसके ऊपर रेजिन डला हुआ है ना, उसको तुम नेगेटिव चार्ज मान लो. फिर लोगों ने कहा J.J. थॉमसन भैया बोल रहे हैं तो मान लेते हैं. पर एक बंदा जो उसी की लैब में काम करता था, कौन? नील्स बोहर. व्हाट डिड ही से? मैं नहीं मानता, नहीं, I do not agree. But he was not the first person to disapprove the plum pudding model given by Mr. J.J. Thomson. The first person to disapprove was actually Rutherford. But let's understand. Plum pudding model given by J.J. Thomson. What does it says? It says that there is a positive charge. पूरे atom के अंदर positive charge है, and there is a negative charge like dots, like raisins, which is scattered inside it. मतलब negative charge इतना नहीं है जितना positive charge पूरा भरा हुआ है. तो एज्यूम करते हैं हम लोग अपनी एजम्पशन और इमेजिनेशन मारते हैं कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, अरे बाप रे, तो क्या होगा अगर मैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फेंकूंगा, तो क्या होगा? वो पॉजिटिव चार्ज ऐसे टकराएगा और ऐसे चला जाएगा.
यस और नो? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल एग्री कि हाँ सर ऐसा ही होगा, क्योंकि हमने भी पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स अ पॉजिटिव चार्ज. सो इफ अनदर पॉजिटिव चार्ज इज कमिंग टुवर्ड्स द एटम, it should get repelled or it should go in different direction. So considering this theory, रदरफोर्ड भैया आए. रदरफोर्ड भैया ने बोला मैं चेक करूंगा इसको. मैं क्या करूंगा इसको? मैं चेक करूंगा इसको. So he devised a method called as the gold leaf experiment, which is one of the best experiments to analyze the atom. ठीक है. एंड थिंक अबाउट इट, इट वाज अ टाइम जब इतनी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी. ठीक है. आज की डेट में इलॉन मस्क पता नहीं क्या क्या बना रहा है, रॉकेट बना रहा है, रोबोटिक आर्म बना रहा है. ही इज आल्सो मेकिंग अ न्यूरल लिंक टू पुट समथिंग इन योर माइंड. ठीक है. बट नाउ लेट्स कमिंग बैक टू द पॉइंट. So what he did, he took a radioactive material, usually something that can give out the alpha rays. What are alpha rays? Mostly लोगों को पता होगा, but जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ. It is helium nucleus He24 without any electron. बिना इलेक्ट्रॉन के जो हीलियम न्यूक्लियस होता है ना, उसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं. तो उसने क्या करा, यहां से अल्फा पार्टिकल निकाला. नाउ ये जो देख रहे हो ना आप गोल्ड लीफ, he made the gold leaf. Now many students ask me, sir, why gold leaf only, why not copper, why not aluminum? हम चाहते तो कुछ और भी ले सकते थे. They are absolutely correct, but better listen to this point very carefully while selecting the gold. Gold is the most malleable substance and he wanted to be as thin as possible. Do you know what was the thickness of that gold leaf? 10 atom thickness. Only 10 atoms thickness. Okay. So what happened? He gave out the alpha rays and what was he expecting? अगर एटम पूरा पॉजिटिव ही है तो अल्फा रेज को रिफ्लेक्ट करेगा. Yes or no? I was also expecting the same thing. पीछे उसने लगाया जिंक सल्फाइड स्क्रीन ZNS. Now, what is the purpose of this zinc sulfide screen is whenever an alpha particle will hit this screen, it will produce bright lightning called as scintillations. ये जो देख रहे हो ना छोटे छोटे, इनको हम लोग बोलते हैं scintillations. भाई हिल गया. Okay, so these are known as scintillation. Scintillations. So scintillations का मतलब क्या है? एक spot, एक light, okay, which keeps on appearing when an alpha particle hits it. वो हमारा डिटेक्टर है. अब एक्सपेरिमेंट तो हो गया, उससे कुछ ना कुछ कंक्लूजन भी आया होगा. तो पहला कंक्लूजन जो रदरफोर्ड ने दिया कि भैया जे थॉमसन, आप गलत नहीं हो, आप हो बिल्कुल गलत. आप बिल्कुल गलत आप कैसे हो? सबसे पहले तो एटम के अंदर भैया इतना खाली स्पेस है दैट ऑल द अल्फा रेज ऑलमोस्ट वेंट अनडेविएटेड. अनडेविएटेड का मतलब क्या है? अल्फा रेज ऐसे ही पार कर गई. इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द एटम. अच्छा, जे थॉमसन सोच रहा है अच्छा ऐसा भी होता है. चलो लेट्स सी व्हाट वर द मेजर आउटकम्स. Number one, atom has a lot of empty space, that is approximately 99.97%. मतलब पूरे एटम को तुम कंसाइज कर दोगे तब जाके कोई 0.03% वो भरेगा, अदरवाइज वो पूरा खाली पड़ा है. अरे ये तो कमाल हो गया. नेक्स्ट, now there were 1 out of 2000 alpha rays which were getting deviated and 1 out of 8000 rays, मतलब 8000 rays. I'm going to move into the next point to show you this part. अगर मैंने 8000 अल्फा रेज फेंकी हैं, 8000, तब जाके कोई एक रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी. इसका मतलब है 7999 वर गोइंग एम्प्टी. अरे ये तो किसी को पता ही नहीं था. जे थॉमसन की हो गई टाइटाइपस. जे थॉमसन सोच रहा है ओ माय गॉड, आई यूज्ड टू बी सो फेमस, now I am nothing because Rutherford proved me wrong. So these major conclusion, number one,
atom has empty space, 99.97% empty space. Number two, the positive charge is accumulated in a very small area called as nucleus. अब तक आप लोगों ने सुन लिया होगा एक टर्म न्यूक्लियस भी होता है, और उस न्यूक्लियस के आसपास कौन घूमता है? जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन। पिछली स्लाइड में क्या दिखाया था? ये देखो, ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसके पास? न्यूक्लियस के पास। वहां क्या है? वहां है प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही रिपेल कर सकता है पॉजिटिव चार्ज को। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। अब यहां से हमने ये सब चीजें तो सीख ली कि रदरफोर्ड भैया ने हमें ये सारे आइडियाज दे दिए, बट इससे सबसे बड़ा कंक्लूजन जो हमने सीखा वो है पॉइंट नंबर 1, कि पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो पूरे एटम में नहीं है, जो कि जे थॉमसन ने बोला था। तो जे थॉमसन की हो गई टैंटा फुस। पर अब आते हैं हम आगे। रदरफोर्ड ने ये प्रूव कर दिया कि भाई एटम का न्यूक्लियस तो बहुत छोटा है, बहुत छोटी सी जगह पे है पॉजिटिव चार्ज, बाकी सारा खाली है। ठीक है, एंड एवरीवन वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड एंड दे वर लाइक, रदरफोर्ड भैया इज एब्सोल्युटली राइट. This brings me back to another. If you want to learn amazing and exciting concepts like this and even better than this, ठीक है, तो join our application. The link is given in the description box. Bridge course, which is our best course for your learning for next 6 days, जिसमें हम आपको coins और rewards भी देंगे starting this Monday. ठीक है, उसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको? एक वीक का कोर्स है, 3 मैथ्स 3 साइंस क्लासेस विल बी देयर, होमवर्क मिलेगा आपको। ठीक है, पर्सनल टीचर टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू, गाइड यू, सॉल्व योर क्वेश्चंस. Apart from that, you will be getting homework on your app, there will be test on the app, and finally books and PDF for maths and science. But ये सब क्या इनफ है? नहीं। पता है क्या इनफ होना चाहिए? इनफ ये होना चाहिए, somebody to create curiosity in you. कोई मेरे अंदर वो इच्छा जगा दे. When I was a kid, I used to think कि if I have to imagine an atom, तो मैं तो imagine ही नहीं कर पा रहा हूँ वो atom कैसा होगा. ठीक है, in the next session I will be telling you about the Bohr's model, and finally we will come to quantum model as well. But click on the description link to enroll yourself quickly. Let's move. Now, I want you all to imagine there is an empty box. In that empty box, there is just one pin. एक पिन है जो कि अच्छे से गड़ी हुई है, that is not movable. Now you are shooting from here. Bad, 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 bad. All your bullets are going empty except one which got deflected. और ये क्यों deflect हुई? Because it was hitting something present inside the box. This is an analogy that will help you remember कि ऐसा ही होता है एटम में. ये सारा एम्प्टी स्पेस जो है ना, ये सारा एम्प्टी स्पेस 99.97%. ठीक है, यहां पे भैया हमारा इलेक्ट्रॉन है बस, और कुछ है ही नहीं, खाली है पूरा. पर यहां हमारा प्रोटॉन है. सो प्रोटॉन वाज द सब एटॉमिक पार्टिकल. प्रोटॉन sorry, proton was the subatomic particle which was discovered by Ernest Rutherford. कॉपी में लिख लो, कोई पूछेगा तो चौड़ में आंसर दे देना. अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था कि प्रोटॉन नाम की भी कोई चीज होती है, सब एटॉमिक पार्टिकल, और उसने ये भी बता दिया था कि वो कहां प्रेजेंट है. ही एक्सप्लिसिटली सेड कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर कॉल्ड एज न्यूक्लियस. अभी हम इस पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी करेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन. ये उसकी थ्योरी है. अगर आपकी गन में बॉल बेयरिंग्स है, आप उसको शूट करोगे, मोस्ट ऑफ द बॉल बेयरिंग्स खाली जाएंगे, सिर्फ एक बॉल बेयरिंग कोलाइड करेगा. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. सो रदरफोर्ड का जो मॉडल था ना, वो प्लम पुडिंग नहीं था. ही कॉल्ड इट अ प्लैनेटरी मॉडल. एक बारी फिर से दिमाग में घुसा लो, प्लैनेटरी मॉडल. व्हाट डू वी मीन बाय प्लैनेटरी मॉडल यार? Planetary model is a model which mimics like the planet. What happens? At the center we have sun,
and at the surrounding we have other planets which move in circles, right? Exactly like this, bilkul exactly like this, we found out that, or I should say, Rutherford concluded that electrons revolve around the nucleus which has a positive charge, के उसके आसपास घूमेगा इलेक्ट्रॉन. अरे हाँ ना बोलो, right? Let's move on to the next part. So this was his idea of the atom. Let's moving on. Now, after understanding, there were many differences. First was the difference how it looked, second was the difference how it behaved, and third, which was a major one, which tells us a lot of empty space. Writing it again, 99.97 empty space. And positive charge is concentrated in something called as nucleus. The discovery of a subatomic particle called as the proton was done by Mr. Rutherford. Now, let's all begin something new and interesting. Some questions that we're going to see. But there was a major drawback. Okay, there was huge drawback to Rutherford model also. Now, what was the drawback? So Maxwell said कि देख भाई रदरफोर्ड, तूने बोल दिया प्लैनेटरी है, मान लिया तू फेमस है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मान लेंगे. So Maxwell said there is a classical theory which states, now we all know that कि whenever there is a circular motion, it's an accelerated motion. ठीक है? Those who do not know, check out my next video. I will be talking about it. Now, let's moving on to the next part. Every circular motion is an accelerated motion. Now, if it is an accelerated motion, Maxwell said the charged accelerated particle always produce electromagnetic wave. This came as a shock to Rutherford. Rutherford बोला यार मैं इतनी मेहनत करा, जे थॉमसन को रॉन्ग प्रूफ करा, और तू आ रहा तू मेरे को रॉन्ग प्रूफ कर रहा है. Maxwell said, I agree that there is a nucleus. Even Bohr agreed that there is a nucleus. We agree that you found out proton, but we just don't agree that it's a planetary model. What does that mean? That means that if you have a particle, let me just change the color ताकि आप लोगों को दिखाई दे. So this was our proton. So he said कि in the time of, this is 10 raised to power minus 12 second. 10 raised to power minus 12 second, which is a very small time. So he said कि इलेक्ट्रॉन यहां से घूमता हुआ आएगा 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 और कोलाइड कर जाएगा. अब आप सोचो यार, इलेक्ट्रॉन गया, कोलाइड कर गया प्रोटॉन के साथ, पॉजिटिव चार्ज हिट विद नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, जीरो चार्ज, खत्म हो गया, एटम ही खत्म हो गया. So this is our problem, Rutherford. We have no problem with you. You are absolutely correct. This is what Maxwell said, that within the time frame of 10 raised to power minus 12 second, your atom, the model you suggested, the model you were confident, the model you said should be working, will collapse. And hence, this was the demerit. This was the drawback. Now this drawback tells us that actually the path which is followed by the electron is not circular in our planetary or elliptical, but it is actually more of a spiral. What is it? It is spiral, and slowly it will disappear. But the time to disappear is too less, 10 raised to power minus 12 second, which is very less than even a blink of an eye. Now I hope you have understood the topic. Let's do some questions. So here is my question number 1. On the basis of Rutherford's model of an atom, which subatomic particle is present in the nucleus? The answer is very simple to this question. Okay, if you are throwing an alpha ray was positive, and positive ray was getting reflected back 1 out of 8,000. So it shows that there is a positive charge present. So he was the person, and I told that many times, that he was the person responsible for finding out that there is a proton
in the atom. अरे हाँ ना बोलो यार. I'm assuming you have understood this part. Next, let's come to assertion and reason. I took different types of questions so that you have a better practice. Assertion. A few positively charged alpha particles are deflected from Rutherford experiment. बिल्कुल सही है. 1 out of 8,000 तो पूरा बाउंस बैक किया था. 1 out of 2,000 अल्फा रेस थोड़े बहुत स्कैटर हुए थे. तो कुछ अल्फा रेज स्कैटर हो रहे थे और हम बहुत खुश हुए ये देख के कि भाई अल्फा रेज स्कैटर हो रहे कि या इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं प्रेजेंट है. रीजन देखते हैं. मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी. यस, मोर देन 99% स्पेस इज एम्प्टी. So according to me, statement 1 is also true and statement 2 is also true. But क्या अल्फा रेज स्कैटर हो रहे थे इसलिए क्योंकि एटम एम्प्टी था? नो. They were scattering because there was a presence of a positive charge at the center of it. अरे हाँ ना बोलो यार. ठीक है. So the correct answer will be both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Okay? Very nice. Let's move on to the next one. फनी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. ठीक है, आंख बंद करके भी कर लोगे तुम लोग. नाउ व्हाट टाइप ऑफ पाथ एन इलेक्ट्रॉन फॉलो अकॉर्डिंग टू डीमेरिट? देखो, डीमेरिट के हिसाब से पूछ रहे हैं, मेरिट के हिसाब से नहीं. कौन कौन गुस्सा हो गया था इस पे? हमने जब बात करी थी, रदरफोर्ड ने बोला प्लैनेटरी मॉडल है, मैक्सवेल ने बोला चल झूठे, प्लैनेटरी कैसे हो जाएगा? जब भी एक सर्कुलर ऑर्बिट होती है ना, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है. तो उसकी वजह से क्या होगा? मैंने बताया था, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन घूम घूम के घूम घूम के गिर गया. दिस इज कॉल्ड एज स्पाइरल पाथ. कहां गया? ये रहा. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पाइरल पाथ. राइट? चलो, दिस वाज द demerit of Rutherford's model. Moving to the last question of today's amazing session. Why was Rutherford's experiment done in vacuum? भाई ये तो लॉजिकल है यार. वैक्यूम में क्यों ही करेंगे? सबसे पहला रीजन जो है, इफ देयर आर अ लॉट ऑफ एयर पार्टिकल्स, तो हमें कैसे पता लगेगा किस पार्टिकल से वो डिफ्लेक्ट हुआ है? अरे यस और नो? ठीक है. सो वी वांटेड दैट देयर शुड नॉट बी एनी एयर पार्टिकल टू स्टॉप द एयर मॉलिक्यूल फ्रॉम इंटरैक्टिंग विद अल्फा पार्टिकल. यहां से तुम अल्फा पार्टिकल मार रहे हो, यहां पे तुम्हारी गोल्ड लीफ है, यहां पे पता चला नाइट्रोजन से टकरा गया और डिफ्लेक्ट हो गया, एंड यू थॉट इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ गोल्ड लीफ. अरे ये तो कमाल हो गया. दैट डज नॉट हैपन. दैट इज व्हाई ही डिड इट इन vacuum. So this brings us to the end of today's amazing session. I hope you liked it, loved it. Gives it a thumbs up. Subscribe to our channel. Again, log into our app. Download ODA Class from the App Store or from the Play Store. You can download it or you can click on the icon given in the description box. Starting from Monday is a bridge course, which is a 1 week duration course. 3 maths, 3 science classes, personal tutor will be given to you. You will have a highly energized tutor to teach you the concepts, the deeper concepts of your next class. Books in PDF with test will be given to you. Subscribe, and most importantly, if you directly want to enroll, take help of your parents as well. You can go into the description channel, click on the link, and you can join our bridge course. Moving on. Now, as I was talking about coins, I think many of the people don't remember, but let me tell you, we reward our students for learning. तुम सीखोगे, हम तुम्हें और खुश करेंगे. This is the philosophy that we want to follow. So enroll quickly, earn reward. For 14,000 coins, you can get an ODA bottle. For 35,000 coins, you can get an MI band, and so on. There is a MI phone also, and in next session I will show you that many of our students have won MI phones. So share, like, subscribe, click on the icon, join ODA Class channel for amazing and fun loving sessions. Till then, see you next time. Love you all, kids. Bye bye.